here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 गाजरों को और शिमला मिर्च को ऐड करने के बाद हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये जल्दी ही पक जाती हैं, इसलिए हम इनको थोड़ी देर के लिए ही बस अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। और इसके अंदर हम सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ऐड कर देंगे ताकि इन चीज़ों का भी टेस्ट अच्छी तरह से हमारे मसाले में आ जाए। उसके बाद हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे जो कि हमने दरमियान से हाफ कट कर ली हैं। ये 3 से 4 अदद होंगी। उसके बाद जब हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से गल जाएगी तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हम अपने चावलों के हिसाब से ऐड करेंगे। जितने आपने चावल लिए हैं उतना ही हम पानी ऐड करेंगे। अगर चावल आपके 3 कप हैं तो पानी आप डबल ऐड करेंगे, मतलब कि 6 कप ऐड करेंगे। उसके बाद हम वेजिटेबल्स को ढक देंगे और अच्छी तरह से उबाला आने तक इनको कवर रहने देंगे। जैसे कि अब हमारी वेजिटेबल्स को बॉईल आने लगा है, मतलब कि पकने लगी हैं, तो अब हम इनके अंदर अपने चावल ऐड करेंगे।
चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इनको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चावलों का पानी खुश्क हो जाए। अब चावलों का पानी खुश्क हो गया है तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इनको मिक्स करने के बाद हम इनके ऊपर बंद गोभी डालेंगे और इनको दम पर लगा देंगे। 5 से 10 मिनट के दम के बाद अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारे वेजिटेबल राइस पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम किसी बाउल या प्लेट में निकाल लेंगे और उनको सर्व करेंगे। मज़ेदार वेजिटेबल राइस तैयार है। आप इनको दही के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं और खट्टी मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।